Good morning, students. In the last class, we have studied the number of poors in India, as well as we have also seen the different data and the comparison between the different states of the country. Okay, so in today's class, we are going to start what are the causes of the poverty. Okay, simply of what reason why the poverty arises. Okay, what are the different causes? Okay, let's start. The causes of poverty lie in the institutional and social factor that mark the life of the poor. The poor are deprived of quality education and unable to acquire skills which fetch better income. Okay. Also, access to the healthcare is denied to the poor. The main victims of caste, religious, and the other discriminatory practices are poor. These can be caused as a result of social, economic, and political inequality, social exclusion, unemployment, indebtedness, and the unequal distribution of wealth. Okay, so the causes of poverty. When we talk about the what are the different causes of the poverty, we see that the okay. Yes, the causes of the poverty lie in the institutional and the social factor. Okay, it is started with the institutional and the social factor, from where there is deprived and discriminatory policies of the government. Okay, that mark the life of the poor. Okay, it is the poverty is basically started from the uh, distinguished from the institutional and the social factor. The poor are deprived of the quality education. जो poor होते हैं, they are not able to get the quality education and unable to acquire skills. Okay, if they don't have any kind of education, so they are also not able to acquire skills which fetch better income. Which brings the better income for the poor. Also, access to the healthcare is denied to the poor. Okay, the poor has also doesn't have the access of the healthcare facilities. The main victim of the caste, religious, and the other discriminatory practices are poor. The basic victim of the poor is the religious and the caste discrimination. We also know that there is caste discrimination as well as religious discrimination practices brings the any individual make any individual as a poor. These can be caused as a result of it is basically the result of the social and economic inequality. क्या होता है कि उन्हें social और politically equality नहीं मिलता है. सोशल एक्सक्लूजन मीन्स कि उनको एक सोसाइटी में इंक्लूजन नहीं मिल पाता है, वो इंक्लूड नहीं हो पाते, इनको एक्सक्लूडेड किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर कास्ट एंड द रिलीजन. थर्ड वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट cause of the poverty. And the indebtedness means the debt which is any poor is taken, it is increasing day by day, and ultimately any individual trap in the debt. Okay, कि वो फिर क्या होता है कि जो डेट है वो बहुत इंक्रीज़ होता जाता है, फिर इंडिविजुअल एबल नहीं हो पाता है कि वो सारे जो भी उसने डेट लिया है फॉर फुलफिलिंग हिज बेसिक नीड्स वो उसको क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए, फिर वो उसी ट्रैप में फंस जाता है. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. जो वेल्थ है, जो इनकम है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है. प्राइमरी सेक्टर में नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं, ना ही टर्शरी सेक्टर. सो इससे क्या हो रहा है कि रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर. Only because of this, it is the causes of the poverty. Okay, so let's start the every point in thoroughly. Okay, the main cause of poverty in India are
impact of British rule on Indian economy. Okay, the first one is the impact of British rule on the Indian economy, कि Indian economy पे British rule का जब impact था, there was a substantial negative impact of the British rule on Indian economy and standard living of the people. Okay, we know very well there was too much exploitation had been done by the British rule, so that it gives the negative impact on the Indian economy and the standard of living of the people. Okay, वो लोग क्या कर रहे थे, बस एक्सप्लॉयटेशन हमारा कर रहे थे. तो इससे क्या था, बेसिकली जो पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट होता जा रहा था इंडियन इकॉनमी पे, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है किसी इंडिविजुअल की, वो भी क्या होती जा रही थी, डिक्लाइन करती जा रही थी. पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, जो उनकी पॉलिसी थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि हम क्या थे, एक इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर हम रॉ मटेरियल के थे और इम्पोर्टर हम फाइनल गुड्स के थे. कि जो भी हमारे रिसोर्सेज थे, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स थे, वो क्या होते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते थे वो लोग, और जो फाइनल गुड्स होता था वो हमें एक्सपोर्ट कर देते थे. And the status of India as an exporter of the raw material, okay, and an importer of the finished goods left India in poverty. Okay, we know it gives the negative impact on the Indian economy because of the industrialization, as our natural resources were plundered. Okay, all our natural resources stealed or robbed by the Britishers. Okay. Under the British rule, India started exporting food grains. As a result, as many 26 million people died in famine between 1875 and to 1900. Okay, under the British rule, we know very well, India starting the exporting food grains. Okay, India ने start किया food grains को export करना, and the result of this are the 26 million people died in famine. Okay, 26 मिलियन पीपल ने क्या किया, फेमाइन की वजह से, एकदम लैकनेस की वजह से क्या हो गया कि दे आर नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, स्पेशली इन दी फूड आइटम, सो दे आर नॉट एबल टू imbibe it or to inculcate it. In that reason, as a result, 26 मिलियन पीपल ने क्या कर लिया था, डाइड हो गए थे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फूड ग्रेन मिल ही नहीं रहा था. अब इस कंडीशन में ब्रिटिश रूल ने क्या किया, जो भी फूड ग्रेन्स यहाँ पे हो रहे थे उसको क्या कर दे रहे थे, पूरा एक्सपोर्ट कर दे रहे थे. अब जब हमारे कंट्री की ही बेसिक जो नीड्स है फूड ग्रेन्स की, वही नहीं हो रही थी, तो इससे क्या हो रहा था, पूरा एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश रूल के थ्रू हुआ, और फिर 26 मिलियन पीपल डाइड भी हुए, और अल्टीमेटली हम लोग पुअर होते चले गए. ओके, इट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी. नाउ द नेक्स्ट वन इज economic condition of the farmers since independence and the state indebtedness. Even today, agriculture is the principal means of the livelihood, and the land is the primary asset of the rural people. Okay, redistribution of land didn't bring positive change in the improving economic condition of the farmers. Also, most of the Indian states failed to implement land distribution policies. Indebtedness among the farmers is another cause of distress among them. Their inability to pay back the loans taken for the cultivation and other domestic needs, as their crop fail due to drought or some natural calamities, sometimes compel farmers to commit suicide. Okay, even today, we know very well, even today agriculture is the basic or the main principle of the livelihood, basically for the rural people. जो भी rural people है उनके लिए अभी भी जो agriculture है वो क्या है, एक basic principle और the basic means है for the their livelihood, उनके livelihood के लिए. and जब हम लोगों ने बात किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लैंड रिफॉर्म के थ्रू, लैंड सीलिंग के थ्रू क्या हो रहा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. सो उसके थ्रू, उसकी भी वजह से कोई भी पॉजिटिव चेंज हम लोगों ने नहीं देखा. इट डजेंट ब्रिंग दी एनी पॉजिटिव चेंजेस अमंग द फार्मर्स और द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फार्मर्स ऑल्सो. ओके, इवन देयर
condition is not properly improved. Also, most of the Indian states fail to implement land distribution policies. Okay, there were also some states they are not able to implement the land distribution system for land ceiling and the land reform. So they also brings the distress among the all the farmers, as well as they it leads to the poverty in the country. Okay, indebtedness among the farmers, okay, is another cause of distress among them. कि वो क्या था, indebtedness means, debt means क्या होता है, जो हम लोगों ने लोन लिया. Indebtedness मतलब they are not able to pay back all the loans whatever he or she had taken. कि जो उन्होंने लोन लिया, अब वो कोई भी अगर लोन ले रहा है, फॉर एग्जांपल कि किसी फार्मर ने लोन लिया, तो वो लोन क्यों लेगा कि वो सिर्फ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, सीड्स को क्या करे, परचेज़ करेगा. फिर उससे वो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी करेगा, प्रोडक्शन करेगा. फिर उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो उससे उसको प्रॉफिट होगा, उसके थ्रू वो क्या करेगा, सारे लोन्स को पे बैक कर देगा. जो भी उसने डेट लिया है वो पे बैक कर देगा. बट उनकी कंडीशन ये हो रखी थी कि वो इतने भी कैपेबल नहीं थे कि वो कल्टीवेशन प्रॉपरली कर सके. इवन दे आर इनएबल टू पे बैक द लोन्स एज वेल एज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स. ओके, उनकी जो डोमेस्टिक नीड्स थी, जो उनके फूड की जो डोमेस्टिक नीड्स थी, इवन दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इट बिकॉज द क्रॉप्स फेल ड्यू टू द ड्रॉट एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज़. जो भी वो कुछ क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे थे, उससे क्या होता, ड्रॉट आ गया या फ्लड आ गया, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ गया, तो जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा था वो फेल हो गया. जब वो फेल हो गया तो वो क्या कर सकते, जब उनका कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो उनका जो भी लोन था वो तो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, क्योंकि वो तो ये सोच देगी जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन होगा उससे हम क्या कर देंगे, सारा लोन को पे बैक कर देंगे. बट still they are not able to fulfill their domestic needs as well as they are not able to pay back all the loans, so that they fetch they are inculcate through the in debt trap. वो क्या हो गए, वो debt trap में फंसते चले गए. ओके, sometime compels farmers to commit suicide. ये भी हो जाता था कि कभी कभी फार्मर्स क्या थे, वो सुसाइड को भी कमिट कर लेते थे, क्योंकि अब उनको क्या प्रेशर होता गया ना कि लोन बढ़ता जा रहा है, तो वो कैसे पे करेंगे. तो उनको एक लास्ट ऑप्शन ये दिखता था कि वो क्या करते थे, सुसाइड भी कमिट कर लेते थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉवर्टी. ओके, कि पॉपुलेशन हमारी कंट्री की क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है. ओके, द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन हायर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ नेशन. ओके, द ग्रोथ रेट, ओके, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो हमेशा इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उससे हमेशा ही ज़्यादा होती है. और होना क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट शुड बी मोर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन. ओके, सो this leads to fall in per capita availability of the goods and services. अब पॉपुलेशन है हमारी बहुत ज़्यादा, ग्रोथ हमारी कंट्री की बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है. जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है. सो दैट इससे क्या होता है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही. दे आर नॉट एबल टू फुलफ़िल देयर बेसिक नीड्स और द बेसिक अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड services, because population of the country is more than the economic growth of the country. The combination of the growing poverty and the growing population has resulted in the higher level of poverty. Okay, the combination when we see the it is growing, increasing poverty plus increasing population, ultimately it leads to the increase in the level of poverty, which is we have taken as the absolute, because absolute poverty is the one, it is the condition when the people of the country or the nation are not able to fulfill his or her basic necessities of the life. So when the poverty of the country is increasing and the
with the increase in the population, ultimately it leads to the level of the poverty is increasing. Okay. Next one is widespread unemployment. Okay. It is very old. Unemployment, you know very well. It is the condition when people are not able to get the employment opportunities. Okay. So widespread means it is वास्टिंग, मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होता जा रहा है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ वेरी ओल्ड एंड स्टिल prevalent problem, widespread in the form of the rural unemployment, urban unemployment, structural unemployment, and the industrial unemployment. Casual laborers are amongst the most vulnerable as they have to have no job security, no assets, no surplus, no to sustain. Then lack of job opportunities, lack of awareness, immobility of factor of production, migration of the rural people to urban areas, lack of industrialization to absorbed unemployed, etc. are the some of the cause responsible for the existence of the unemployment in India. Most members of the SC and ST are not able to participate in the emerging employment opportunities in urban and rural economy as do not have the necessary knowledge and skills to do so. It has become a chronic problem which causes a challenge to the economy. It has resulted in the low level of output, low level of income, low level of capital formation, causing lower level of national income. It is because of lower level of national income that a large share of population lives below the minimum subsistence level. Okay. So it is very old and still prevalent problem. Means till now we are seeing that the unemployment problem is very widespread. Okay. Still many people are not able to get the employment opportunities. Basically in the rural unemployment, urban unemployment, structural unemployment, and the industrial unemployment. These all are the types of the unemployment which will also be studied further. Casual laborers, the laborers who is working every day and getting for working and they get paid, are the amongst the most vulnerable as there are no job security. ठीक है, इनके पास क्या होती है, कोई भी जॉब सिक्योरिटी होती नहीं है. आज अगर कहीं पे वर्क है तो आज उन्हें जॉब मिलेगी, वो वर्क करेंगे. कल क्या होगा, नहीं है तो वो they don't have any kind of job security, they don't have any kind of assets and no surplus to sustain their life. Lack of job opportunities, lack of awareness. People have lack of job opportunities. उनके पास क्या है, job opportunities नहीं होती है, aware नहीं होते हैं. Immobility of factor of production. Immobility means the laborers. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिंपली मीन्स जो लेबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लेबर मतलब पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल होना नहीं चाहते हैं. मोबाइल होना मीन्स कि वो एक जगह जहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहते. ओनली बिकॉज ऑफ उनका एक अफेक्शन उनकी अपनी फैमिली के साथ होता है, या उनका एक अफेक्शन अपने जहाँ पे वो रह रहे हैं उससे भी अफेक्शन होता है कि वो लोग दे डू नॉट मोबाइल टू अनदर state or the another area for their employment opportunities. And the migration of rural people to urban areas, the people who are migrated from the rural to urban areas. Lack of industrialization. Okay, there is also lack of industrialization. There is no more industries which absorb the unemployed person. Okay, industries भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो different जो unemployed हैं बहुत ज़्यादा उसको भी वो absorb कर सके. Are some of the cause responsible for the existence of unemployment in India. So these all are the problems of the unemployment
in India, most member of the SC and ST are not able to participate in the emerging employment opportunities. Okay, there are it is also based on the caste system that the SC and ST are not able to participate in the emerging different kind of employment opportunities in the rural as well as the urban area, as they do not have any necessary knowledge and skill to do so. They don't have enough education, quality education, they don't have necessary knowledge and skill to do so, so they also facing the problem of unemployment. Okay, it has become a chronic problem which cause a challenge to the economy. Chronic problem means it is very long process or the long lasting problem which is challenge for the Indian economy. It has resulted in low level of output. Simple. If you think that if there is no situation, no production or the no industrialization of the good, so people is get more and more unemployment. If they are unemployment, it leads to the low level of output, okay, and low level of income. If nobody do their work, they not able to get any kind of income, so low level of income, low level of capital formation, there will also no any kind of investment, low investment or capital formation as well as they also causing the level of national income. It all, if all these are not happen, so ultimately it leads to the low level of national income. Okay, so it is because of low level of national income that a large share of population lives below the minimum subsistence level. Okay, only because of the low level of national income, the large percentage of the population are below the minimum subsistence level, which means they are not able to fulfill his minimum subsistence level. Means the it is the level in which the people are not able to fulfill their minimum subsistence or minimum necessities of their life, food, shelter, cloth, education and the health services. Okay, next one is low level of capital formation. Capital formation in India is very low, which causes low level of economic development. Capital deficiency exists because of the low level of income, due to which there is low level of saving and low level of capital formation. It has resulted in declined level of production, income, saving, investment and capital formation. It results in low level of aggregate demand. Production causes lack of job opportunities and hence it leads to the poverty. Okay, we know very well capital formation or the investment in India is very low. Okay, nobody is interested to invest their money or to create the capital formation because there is low level of economic development. अगर हम ये जान जाएं कि हम यहाँ पे इस एरिया में, इस सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी इन्वेस्टर अपने मनी को इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा? So it is the condition of our India also that the low level of economic development. Investors or the producers, they say that there is low economic development, there is no development. So anyone is not quite interested to invest their money. So capital deficiency exists because of the low level of income. अब कोई मनी अपना इन्वेस्ट तब ना करेगा जब उसके पास खुद का मनी होगा. तो कैपिटल डेफिशिएंसी इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ इनकम. उनके पास इनकम ही नहीं है, ड्यू टू विच देयर इज़ लो लेवल ऑफ सेविंग. अब जब किसी के पास इनकम नहीं है तो वो सेविंग क्या करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? इन लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. ओनली बिकॉज ऑफ नेशनल इनकम वी कैन डू capital formation, we can do investment as well as we can do the saving. So only if there is low level of income,
so there will be no chances of the saving as well as capital formation. It has resulted in declined level of production. If people don't have enough money, see, if there is no money in economy, it leads to low level of capital formation, it leads to the low level of production, income, low level of income, low level of investment, low level of saving, and low level of capital formation. Okay, if there is no capital formation, अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो कुछ प्रोडक्शन भी नहीं होगा, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, प्रोडक्शन ही होगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो किसी के पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो किसी की सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी तो कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेविंग नहीं होगी मतलब अगर किसी के पास इनकम नहीं होगी तो वो ना तो सेविंग कर सकता है, ना वो कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता है, ना ही कहीं वो इन्वेस्ट कर सकता है। सो अल्टीमेटली it result in low level of aggregate demand. If individual doesn't have any kind of income, so nobody will demand any kind of good, so aggregate demand will also decreases, and the production causing lack of job opportunities, and low level of production leads to the decline in the job opportunities. अब production नहीं होगा तो कहाँ पे कोई जॉब करेगा, जॉब करने के लिए भी तो कोई तो प्लेस चाहिए ना, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, अल्टीमेटली क्या होगा, अनएम्प्लॉयड होंगे। अनएम्प्लॉयड होने का मतलब क्या है, पॉवर्टी। सो इट्स ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, it is the main cause of the poverty in India. Underdeveloped state of the Indian economy is clear from the backwardness of the agricultural and the industrial sector, which is due to lack of the social and economic infrastructure in our country. Poor state of the infrastructure facilities also result in the slow pace of development. Britishers' ruthless exploitation of the country had left India in such a poor state that India could not yet overcome from the losses and remains underdeveloped. Okay, and infrastructure only because infrastructure is also the causes of the poverty. How? Let's see. Okay. It is the main cause of the poverty in India. Underdeveloped state of the Indian economy is clear from the backwardness of the agricultural and industrial sector. The एग्रीकल्चर सेक्टर है जो हमारा, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या, बहुत बैकवर्ड है, मीन्स उधर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, एज वेल एज सर्विस सेक्टर में डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। हम कमोडिटीज़ प्रोड्यूस तो कर लें बट हमारे लिए प्रॉपर मार्केट नहीं है। तो इनकी वजह से क्या है, जो सारे इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्ड होते चले जा रहे हैं, विच इज़ ड्यू टू लैक ऑफ दी सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली बिकॉज ऑफ दैट। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है, किसी के पास प्रॉपर हेल्थ नहीं है, अब कोई एजुकेशन ले भी लिया उसके बाद उसकी हेल्थ ही नहीं उसको कह रही कि तुम कुछ काम करो, तो कोई कैसे काम करेगा। तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर social as well as economic infrastructure. Okay, different kind of facilities of the transportation, warehousing, banking, insurance, schools, health services, health facilities. So there should be a proper facilities of the infrastructure. Poor state of infrastructure facilities also result in slow pace of development. If all these small services will not able to find or the we can sum up all these different kind of infrastructure, so it ultimately leads to the slow pace of development. अगर हमें
अगर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपर फैसिलिटीज़ में नहीं मिलेगा तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ डेवलप हो ही नहीं पाएगा, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. जब हम कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इट अल्टीमेटली लीड्स टू द डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Britishers' ruthless exploitation of the country had left India in such a poor state that India could not yet overcome from the losses and remains underdeveloped. Okay, the Britishers' exploitation of the country, Britishers exploited India very much so that India become the poor state, that the still India not able to overcome from the all the losses, and it remains the underdeveloped. Okay, from this we have concluded all the our today's class, and in the next class we will continue further. So what we studied the causes of poverty, in which the first point is impact of the British rule on the Indian economy. Second is economic condition of the farmers since independence and state indebtedness, high growth rate of population, widespread unemployment, low level of capital formation and lack of infrastructure. So further different causes of poverty which will we study in the next class.